इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एप्लीकेशंस देखेंगे. बट बिफोर दैट वी नीड टू बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ all trigonometric ratios at all values of theta. कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. आपको याद है ना? नहीं? लेट्स रिकॉल देम. इनको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट है. सो व्हाई डोंट यू मेक दिस टेबल विद मी? सबसे पहले हम एंगल्स लिखते हैं. वी कैन राइट देम इन आइदर डिग्रीज और रेडियंस. विच एंगल्स हैव वी स्टडीड बिफोर? 0, 30 और पाई बाय 6, 45 or pi by 4, 60 which is pi by 3 and 90 which is pi by 2. Next, we put numbers from 0 to 4 under them. फिर इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगाकर 2 से डिवाइड कर दें. So root 0 upon 2 तो 0 ही रहेगा. Root 1 upon 2 is half. Then root 2 upon 2, root 3 upon 2 and root 4 upon 2 which is 1. Cos के लिए हम इसको backwards पढ़ते हैं. यानी cos 0 will be 1, cos 30 half, cos 45 root 2 upon 2 and so on. We also know from the complementary identities that cos 0 is the same as sin pi by 2, cos pi by 6 is the same as sin pi by 3 and so on. Tan के लिए हम simply इनको divide कर देते हैं. So we know the trig values for all these angles. हम इनकी multiples पे भी ये values find कर सकते हैं. But what about, say, sine of 32.5 degrees or cos pi by 7 radians? Thankfully, हमें ये सारी values याद नहीं करनी पड़ती. We can just use a calculator. So we need to use a scientific calculator for this. पहली चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना है वो ये है कि calculator degree mode में है या radian mode में. Usually a small d or r on top tells us this. We can press shift plus mode to switch from degrees to radians and vice versa. Then we simply choose the ratio we need and we enter the value. So to find out cos pi by 7 for example, we press cos then pi divided by 7 and we get 0.9. For degrees in minutes and seconds, don't forget to convert the values first. So 36 degrees 20 minutes will become 36.3 degrees and the sign of that will be 0.59. But there are no buttons for cot, sec and cosec. So for those, we take reciprocals of the main trig function. So 1 divided by sine is cosec, 1 divided by cos is sec, and 1 divided by tan is cot. But what if we have the value for a certain angle and we need to find that angle? Well, there is a way to find that also. Let's say we know sine theta is 0.6. On the calculator, we enter shift plus sine plus 0.6 and get 36.8 degrees. This is called sine inverse and we'll learn more about it in the next chapter.